importance of studying Bhagavad Gita, wherein we are just starting to talk about Bhagavad Gita, but we are starting with a shloka which is just 4 verses before when the Bhagavad Gita ends. So it's kind of, very, what we can say, contradictory कि हम लोग शुरुआत करने की बात कर रहे हैं लेकिन श्लोक ऐसा ले रहे हैं जिसके 4 श्लोकों के बाद में पूरा भगवद गीता ही समाप्त हो जाएगा एक हिसाब से। तो उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के बाद श्लोका रिसाइटेशन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, परफेक्ट्स। ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतमस्मिन् गुरुर्भक्तदामोऽयं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सकलगुणरत्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलां श्रीशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगद्गुरु देशकोटि प्रकाण्ड विश्वाम सुदेव प्रेमामि दीपे वाचा जय प्रभु श्री राधा शिवासादि गौर भक्तवेदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं टेक्स्ट रिसाइट करूंगा, ओके? आप लोग भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं रिसाइटेशंस का, एंड वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन एंड पर्पस एवरीथिंग, ओके? संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। Sanjay Uvacha, Sanjay said, Iti thus, Aham I, Vasudevasya of Krishna, Parthasya and Arjuna, Cha also, Mahatmanaha of the great soul, Samvadam discussion, Imam this, Ashrausham have heard, Adbhutam wonderful, Romaharshanam making the hair stand on end. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Sanjay said, thus I have heard the conversation of 2 great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on end. What to feel. The entire study was related to the heart of Sanjaya by the grace of the spiritual master, Vyasa. He has explained the theme of the battlefield. The conversation was wonderful because such an important conversation between 2 great souls had never taken place before and would not take place again. It was wonderful because the Supreme Personality of Godhead was speaking about himself and his energies to the living entity, Arjuna, a great devotee of the Lord. If we follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna, then our life will be happy and successful. Sanjay realized this, and as he began to understand it, he related the conversation to Dhritarashtra. Now it is concluded that wherever there is Krishna and Arjuna, there is victory. So this is like in Sanjay is saying this to Dhritarashtra practically, and what he is saying. Yes. Conversation. The kind of emotion experienced by Arjuna, wherein when he saw the universal form of the Lord, जब उन्होंने भगवान का विश्व रूप देखा था, तब उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था कुछ कि उनके भी जो रोम होते हैं, वो एकदम hair was standing on the end. So that was like one unique experience, right? Now, I'll be sharing some of the points. So in this session, we'll be talking about, like, in the first, we'll discuss about the shlokas, okay? Then we'll take it into practical life, like how do we apply, like kind of, who gave us Bhagavad Gita? When we said, like, it's Prabhupada. Because of Prabhupada, we are able to discuss Bhagavad Gita. We'll be talking about his experience, like what are the pastimes of Srila Prabhupada, and later about the practical aspect, how to apply Bhagavad Gita, right? So we'll start with this, Now, what Krishna says, this particular thing, he says, now I've heard it. Sanjay says this to Dhritarashtra, that it is very wonderful, and it won't happen again.
And I think that's not in the future. There will be Illustrator, there will be one key point will be sex. Let us have this is Bhagavad Gita. So that is what we are reading in this particular shloka as well, what the Lord says. But if you look, you all know how many types of Gitas are there? Anyone? They're like practically what I know. I won't say that these are all, but there are three Gitas. Okay, one is this very Gita which we are studying, and after later on, what happened on the battlefield of Kurukshetra was that Arjuna said, Krishna, can you please tell me the Bhagavad Gita again? Because I guess I kind of want to hear the message again, and it's completely different from this Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is completely different from this Bhagavad Gita. It is known as Anu Bhagavad Gita, Anu Gita, and it also comes in the part of Mahabharata. And then later on, when like Krishna is kind of this war was over, then Uddhava goes and Uddhava is sent by Krishna to the gopis in Vrindavan, wherein he takes his messages. Then again Uddhava comes back. So at that point of time, after this Bhagavad Gita, what is said is Uddhav Gita, which is also in turn completely different, not the same, right? So there are these three types of Gita. Two are said to Arjuna only. One is said to Uddhava. And this particular Anugita is a part of Mahabharata and Uddhava is separate. I guess Anugita is also published. Maybe you all can, kind of check this, And the thing is that why is this particular scripture unique? One may say that there are so many scriptures in Bhagavad Gita, why here Lord Himself, Supreme Personality of Godhead, which is Krishna, is talking about Himself. Okay, first of all, His various energies. Who are the energies practically? What are His energies? Antaranga, Bahiranga, Tatashtra, and speaking this message to a living entity, which is Arjuna. Correct? So in this manner, it is like very unique. You all can kind of understand because we are hearing it, not directly. One can say, that we are hearing from different person. As you all are sitting over here, you all may say we are hearing it from you. But Arjuna's position was as such; he was hearing from Supreme Personality of Godhead only directly. So it was such a unique thing. But the thing is, what we need to understand that this Grantha and Lord Himself are not different. It's the manifestation of the Lord Himself in the form of Scripture. That's the whole point. And later on, what happens is, in this, if you read, sorry for some technical interruption. Okay. So now we'll continue. What we were discussing was that how this particular message, is given by Krishna to the living entities, right? And also here, if you look in the very, you can say third last line, Prabhupada writes that if we follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna life, we'll be happy and successful. Most of us are working, in order to make our lives successful. And why do you want to be successful? In order to become happy, right? Anyone has any other motives?
apart from being happy and successful. I guess like these two come hand to hand. If one is successful, one is happy. How much of you agree? Raise your hand. See, I'm just telling you all to raise your hand, but I'm not doing that so because I don't agree on that. Okay. In today's context, like modern material context, So only two people, one, two, three of you all. Okay. So we'll hold this discussion later, but remember this point. Okay? Remember this point. So now, what is said that this particular knowledge, if we see Sanjay, was Sanjay was disciple of Vyasadeva. So this particular pastime was kind of given out, or it was given in the heart, revealed in the heart by the mercy of Srila Vyasadeva to Sanjay. And when Sanjay began to realize it, when he started realizing it, then he was conveying it to Dhritarashtra. Then he started conveying to Dhritarashtra. Now, why are these, we are studying Bhagavad Gita, there are so many scriptures outside, there are so many Upanishads, there are so many Puranas. Why is this important? Why is this important? So first we'll establish was the importance of this Bhagavad Gita, right? So this particular Bhagavad Gita, there's a saying in English, this is actually the bread and butter of Srila Prabhupada's teaching. In fact, not only Srila Prabhupada's teaching, but the teachings of the whole Gaudiya Vaishnava Sampradaya, going up to Chaitanya Mahaprabhu, where he states, Al Shrishava Padartham Pinashtuma Adarshanam Varmahtam Karotu Yatha Tatha Va Vidadhatu Lampoto Mat Prananathastu Saev Napara. So this verse actually talks about surrender. शरणागति हम लोग बोलते हैं ना कि समर्पण करना चाहिए हमें भगवान को, तो ये उसके बारे में बताती है. तो अब ये तो करना है, पर किस रूप में, सरेंडर किस फॉर्म में. तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग इसको मतलब बोलते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब हाँ क्या बेसिक चीज है, बट ब्रेड एंड बटर अभी हमने एक टर्म यूज किया, राइट. सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है. आप में से किसी को पता है ब्रेड एंड बटर? बोलेंगे एक वाइट ब्रेड एक बटर पीला कलर का, दैट्स ब्रेड एंड बटर. बट इन इंग्लिश फ्रेज what does bread and butter mean? That it is, you have all the tasty stuffs aside, you might have cakes, you might have pastries, everything, but bread and butter means the basic nourishment. You get nourishment from basic things, and these particular and they then can be tasty also, depending on how one conceives it. So similarly, these teachings, they are bread and butter of Srila Prabhupada, what he has given. And to establish this, we can say that we might be hearing the same thing over and over. आप में से बहुत लोगों ने, किसी ने Prabhupada lectures सुनना start किया? आप में से किसी ने? So we might be hearing, Prabhupada establishing the same point again and again, that we are not this body, we are this soul, there's no enjoyment in this material world. ऐसे बहुत सारे concept Prabhupada says again and again, right? And similarly, what people might think that these are repetitive term जहाँ पे आ जाता है, that is synonymous और आपको फिर वो बोलना नहीं पड़ता, boring. बार-बार एक ही चीज बोल रहे तो boring है. But what we have to understand that the teachings or the messages of Vedas are not boring. That's the whole point. इसीलिए 5000 वर्षों से यही भगवद गीता यही मैसेज चला आ रहा है. And when you read it more and more, again and again, then you come to know, that it always brings you to a new light, new insight. You will get different kind of realization every time you read it. So that's the whole point. That's the teaching of Srila Prabhupada. If you look at Srila Prabhupada never spoke or never tried to give out something different just to relate or just to entertain his followers. कि चलो हम लोगों का जैसे होता है ना कि लेट अस ब्रिंग सम न्यू कंसेप्ट, थोड़ा नया स्टोरी लेके आते हैं, थोड़ा कुछ और हम मसाला लेके आते हैं, तो ताकि लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाए. कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग प्रेजेंटेशन दिखा देंगे लोगों को, थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियोस दिखा देंगे जो होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा देंगे. बट Prabhupada never did that. Prabhupada spoke the same point, hammer करते थे Prabhupada. No, this is this. So that is what we are, kind of going again. And Prabhupada also said
this one thing that if you go on reading my books again and again, you find new light. New light. That's very important. You know, why new light? एक ही चीज पढ़ूंगा तो मुझको क्या कुछ नया मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. But it's different with Suraj. आप में से बहुत लोग इसे relate नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है. So we also have books. I guess we have volunteers also. So take a small book. Take a small book. छोटी सी बुक लीजिए 10-15 रुपीस की and you just read it. एक बार उसको रीड करके अगेन उसको रीड करिए. आपके बोलते हैं ना कॉलेज के सिलेबस जैसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार पढ़ेंगे तो सेम ही चीज आपको लगेगी. नो, इट इज आल्सो it will and it is definitely going to bring you in a new light again after some time, right? So there's so much learning, you know, in each and every verse of Bhagavad Gita that practically we can say that it's unlimited. Why? अभी इससे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, right? That when Krishna winded up his pastime, so he manifested himself as this book, this particular scripture. It's not a normal Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. This is Krishna himself, right? So since Krishna is unlimited, right? We say Krishna has no end. So similarly, these teachings of Bhagavad Gita, they are also Krishna himself. They are also unlimited. आप कोई नहीं बोल सकता ना. We have different courses in our temple going on. वो कोर्स करने के बाद कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि चलिए बस अब तो मुझको भगवद गीता आ गई, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, I'll keep it aside. अब क्या ही करना, अब तो मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है. जैसे मटेरियल वर्ल्ड में ना, इंजीनियरिंग कर ली, सेमेस्टर्स निकाल लिए, प्रैक्टिकल्स हो गए, सब हो गए, एक सर्टिफिकेट दे दिया हमको यूनिवर्सिटी ने. ओके, यू आर इंजीनियर, यू डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग. When you go outside, do your job, whatever is meant to do, that's it. You are qualified. आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाना. You don't need to go through the syllabus. कोई सॉन्ग टॉम लेके बैठता है, strength of material, you know, theory of machine and stuff like that. Engineers, मैं engineer से relate कर पाता हूँ because I belong to that background. I don't know what goes for the common and arts people. Okay, so that is how it is, but it's not the same in ISKCON, or we can say in our movement. So this is one thing, right? Now, भगवद गीता ऐसा भी नहीं है ना कि मजा आता पढ़ने में. किसको आता मजा? हाथ ऊपर कीजिए. They are like pure souls. Even I don't find it fun. That's really good. That's not something to laugh about. I was just, you know, laughing on myself. कि मेरे को मजा नहीं आता because it's not a novel. ना, भगवद गीता आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा. It's not novel. It's collection of instructions, right? Each and every verse by verse, that instruction goes on. But उनको मजा किसमें आता है? Novels पढ़ने में आता है. And it is a part of a very big novel, you can say, of Mahabharata. You know, actually, Prabhupada says that what, you know, everyone, even the acharyas say that whole Mahabharata was practically performed in order to just give Bhagavad Gita to the living entity. It's just like a sandwich, you know, up bread, you have down, you have having bread, but the main thing is in middle. So that's Bhagavad Gita. And in Bhagavad Gita, the middle 6 chapters are what they compare with the creed, right? So this is the importance of Bhagavad Gita. But when you look at, you know, let's say, हमारे भारत में लोग भगवद गीता इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? रामायण, right? रामायण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसका एक स्टोरी लाइन है, ना? वो कहानी है, कहानी के रूप में, जिसमें भगवान रामचंद्र के जितने भी पास्ट टाइम्स हैं, सीता माता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इनके बारे में बताया. तो वो भी आध्यात्मिक हैं. They are all transcendental pastimes of the Lord. So it's like good when we are hearing it and kind of, you know, when we are taking learnings from it, they are all transcendental. But with the Bhagavad Gita, it's different. You know, it's not in a story format or itna, balki it is having, these things are having sequence. कि हाँ भगवान रामचंद्र थे एक अवस्था में, फिर बाल कांड आता है, आरण्य कांड आता है, फिर इस प्रकार से अलग अलग उनके पास्ट टाइम्स आते हैं. बट इन भगवद गीता आल्सो देयर इज थ्रेड. बोलते ना एक धागा बोलते हैं ना. Each and every teaching is related to another, but the thing is, in order to just find out that thread, one has to dive in deeper. You know, हमको बहुत intensely इसको study करना पड़ेगा, analytically study करना पड़ेगा, deeply study करना पड़ेगा. वरना हमको सिर्फ ऐसे लगेगा कि हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, ऐसा मुझको लगता है. But when I hear from, you know, various Maharajas,
senior devotees, when the way they explain Bhagavad Gita, you'll come to know, there's more to what we can see, because we are limited in our own context, right? हम लोग अपने हिसाब से क्या ही पढ़ पाएंगे इसको, unless and until there's guidance, right? So this is like finding out the thread, but the thing is, how can we find it out? प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, यहाँ थ्रेड मिलेगा नहीं, फिर उसके बाद बताया कि चलो एक छोटा सा सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस किया कि उसको बहुत इंटेंटली शायद हमको स्टडी करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज श्रवणम मननम, ओके, once we hear then we have to contemplate this another term. हम लोग फर्स्ट वाला तो कर लेते हैं, even after joining ashram, becoming devotees, फर्स्ट वाला तो कर लेंगे, कोई भी लेक्चर में बैठ जाएगा और 2 hours 3 hours even 4 hours लेक्चर बैठ जाएंगे हम लोग, बट फिर उसको कंटेम्पलेट कितना कर रहे हैं, हाउ मच आर वी थिंकिंग अबाउट इट? मेरे दिन का 4 घंटा तो मैंने उसमें डाल दिया, बट मैं उसको कितना कॉन्स्टेंटली अपने बोलते हैं ना माइंड में आई एम प्लेइंग इट बैक. जस्ट फॉर एग्जांपल वी कैन से व्हाट्स द लेटेस्ट मूवी नाउ, ओके, जो भी है, तो हम लोगों में से कितने लोगों ने वो देखी होगी, और देखने के बाद में व्हाट वी डू इज फर्स्ट थिएटर में हमारे दिमाग में चला, थिएटर से बाहर आ दिमाग में चला, घर पे पहुंचे, माता पिता ने बोला बेटा क्या देखा, बेटा बताएगा कि हमने ये देखा, फिर दोस्तों में आया तो दोस्तों में डिस्कस करेगा सेम सब्जेक्ट मैटर, जिस दोस्त ने देखा होगा उसके साथ अलग डिस्कस करेगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको अलग बताएगा, तू भी देख इसमें ये है ये है ये है. फिर उसके बाद में आज के समय पे हम लोग रिव्यूज लिखते हैं, वी पोस्ट इट ऑन फेसबुक, वंडरफुल मूवी दिस. तो ये कितना हम लोग उस पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं एक छोटे से मूवी पे, 2 घंटे की मूवी पे, जो हमारे जीवन में उसके बाद और अच्छी मूवी आएगी, राइट? बट ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर पे कितना मनन कर रहे हैं हम लोग? नहीं हो रहा. हम लोग यहाँ आ रहे हैं एडजस्ट करेंगे, एंड इट्स नॉट ओनली यू, हम लोग बोल रहा हूँ मैं, इट इंक्लूड्स मी आल्सो, राइट? इवन आई डोंट काइंड ऑफ कंटेम्पलेट, ये भी हैबिट हम लोगों को डेवलप करनी है. बट द थिंग इज, इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड वी मस्ट नो फर्स्ट दैट वी आर डिजीज्ड, राइट? हमको पता ही नहीं हम बीमार हैं, तो फिर दवा क्यों लेंगे हम? सो दैट्स द मेन पॉइंट. This is one thing, Now, Srila Prabhupada, he said one thing, that this Bhagavad Gita is having how many shlokas? Good. So 700 shlokas are there, 18 chapters are there. Prabhupada said, even if we study one verse and apply it in our life, we'll attain all the perfection and success in our life. That's it. Even one verse, एक verse. But in Prabhupada's case, if you look, in Prabhupada's book, even if you apply that one line in your life, you'll get all the perfection. That's the kind of, we can say, the power of the scriptures or the instructions which are given. So that is one thing, right? Now, while, let's say, Prabhupada was in India, this is like one section we have finished, where we were discussing about the importance of the verse. Now we'll be relating it, what Prabhupada's pastimes are in connection to Bhagavad Gita. So Srila Prabhupada, while he was in India, he used to question people, that why are you all neglecting this value of Bhagavad Gita? Not many people read Bhagavad Gita, even though we have that particular roots and everything, that it's easy for us to understand Bhagavad Gita, right? हमसे ज़्यादा और किसी के पास सुविधा नहीं है कि वो भगवद गीता को समझ पाए या उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए. कोई भी, मतलब हम जितने फॉर्चुनेट हैं, बिकॉज वी आर बॉर्न एक्चुअली इन दिस लैंड. महाभारत में भारत आ रहा है, भारत भूमि में तो हम सब हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं. दैट इज व्हाट वाज कंसर्न of Srila Prabhupada. He used to ask, he used to question, why we are not doing that. But there's another thing, that people may think कि हम लोग तो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है, हम we are reading it, we are kind of preaching it, या फिर हम encourage कर रहे हैं, we are going out and we are encouraging people to read भगवद गीता. हमको क्या बनना है, धार्मिक बनना है, सिद्धांतिक बनना है, हमको अपना अपहोल्ड करना है रिलीजियस बैकग्राउंड. बट वो टीचिंग के पीछे आज के समय में क्या है, व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स? जो लोग आज के समय पे, बहुत सारे लोग झंडा लेके निकल जाते हैं, धर्म के नाम पे वायलेंस होता है, कुछ होता है, उसके पीछे व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इट? आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स?
they identify the body, that's why it happens. That is one thing, identifying with the body, you know, because हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे birth लिए या फिर ऐसा, but they are not following the teachings actually. We are unaware of the teachings, what teachings are given. Similarly, if you see that what did Sanjay said, Sanjay said that just by hearing this particular message, my hairs are standing on the end. And just like, when we follow in the footsteps of devotees, like, or we can say, living in like Arjuna, we'll have our life happy and successful. And now the point is, what makes it difficult? Question is that अर्जुन ने किया, यहाँ पे बताया भगवान ने, अर्जुन ने भी बताया, क्वेश्चन किया कि कैसे करना है, क्या करना है. So what makes it difficult for us to follow in the footsteps of Arjuna? Is there any difficulty? Question. थोड़ा जागना पड़ेगा ना, सिर्फ सुनेंगे तो कैसे दिक्कत हो जाएगी. फिर मुझको थोड़ा कंटेंट सोचना पड़ेगा, क्या बोलूँ. आप लोग सोचेंगे तो मेरे पास थोड़ा बहुत और होगा बोलने की. So you'll have to think about it. What makes it difficult in order to live according to the instructions of Bhagavad Gita? Answers. Online devotees who are there, they can also try to answer. Yes, Prabhu. Your name? Dakeshwar. Okay. Your answer? Desires. Desires. One answer. Prabhu, your name? Peer. Sushant. Sushant. The peer, Sangat. Acha, the peers. Your association kind of. That's what is creating difficulty. Anyone else? Dakeshwar, Prabhu and Sushant. Sushant Prabhu is having second answer. It doesn't make it difficult. Having a good peer can make it easier. But I mean, we have ISKCON, right? Which is providing you the solution. So why aren't you taking it? I mean, what you said is the problem. We are giving you the solution. Okay. So now, when will you apply? So that is one thing. Okay. One thing is desire, that we are having desire, right? So desire is one thing. So now, the thing is, we do not even have, let's say, अगर हमको successful बनना है तो अर्जुन के नक्शे कदमों पे चल लेंगे, but as it is अर्जुन के इसमें भी तो नहीं चलना, because Arjun was actually having a specific role in Krishna's pastime. That's the whole thing. तो इसका आंसर हम लोग देंगे कि what makes it difficult and how do we solve it? Okay. It's a suspense. We are having two questions now. First question, second question, both will be answered in the later stage. Okay. So when Prabhupada, went to West, जो West में गए, Prabhupada, he was speaking the same message. Bhagavad Gita बोल रहे, speaking same message, but for different audience, right? यहाँ पे आप लोग intently सुन रहे हैं इस message को because आप में से सभी लोगों को at least भगवद गीता के बारे में किसी ने सुना होगा थोड़ा बहुत, किसी ने भगवान के बारे में सुना होगा, लॉर्ड श्री कृष्ण के बारे में familiar होंगे आप, किसी ने कुरुक्षेत्र के बारे में सुना होगा, राइट? ये चार चीजों में से एक ना एक चीज से आप लोग फेमिलियर होंगे, बट वेस्ट में कौन जान रहा है इन चीजों, और कोई क्यों सुनेगा? बट Prabhupada, when he was in West, he was speaking the same philosophy, but the thing is, it was not the philosophy that made his followers become his followers. That's the whole point. ये जो आंसर है ना हमारे क्वेश्चन का, what makes it difficult in order to go up in Krishna consciousness, that will be answered over here. So now, अभी हम लोग फिलॉसफी की बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद के जो अर्ली डेज के फॉलोअर्स थे, they never became his followers just because of the philosophy. Philosophy तो दूर की बात है. So what was it that attracted them? To a large extent, it was his personality. It was Prabhupada's personality, which attracted them. The way Prabhupada was, कभी आप लोगों ने experience किया है? I'll give you all an example after finishing this. Okay. So now, they were, their faith was practically inspired by Prabhupada's personality, because the way he was, dealing with them, the way he was, and they didn't even know the philosophy of Bhagavad Gita. आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता एटलीस्ट स्टार्ट की है? स्टार्टिंग के पेजेस पढ़े आप लोगों ने जो रिव्यू देते हैं क्रिटिक्स, उसके अंदर there's one philosopher, professor, his name is Thomas J. Hopkins. पढ़ा आप लोगों ने उनका? So you should read it. So this is one pastime related to him only.
So when this Thomas Hopkins, he kind of heard, he actually came in contact with ISKCON during the incipient days. Incipient means the very early days of ISKCON, right? So when he came, he was like actually in New York. This movement was going in New York, right? And he was in Pennsylvania. So when he heard about it, he came there. And he was a very scholarly person actually, and he was studying what? Bengali Vaishnavism. A scholar in Bengali Vaishnavism. He came and then he didn't meet directly Prabhupada, he met his followers first, right? And when he met his followers, he was like kind of interacting with them. And while interacting, he asked them, you know, do you all know about Chaitanya Charitamrita? They said, no. Like, what you're talking about? We don't know about this thing. So now when he first met them, he was unable to understand them only. कि मतलब ये कैसे लोग हैं जिनको चैतन्य चैतन्य के बारे में पता नहीं, but ये follow कर रहे हैं गौड़ी वैष्णविज्म या बंगाली वैष्णविज्म, because Chaitanya Charitamrita is a most prominent scripture in Gaudiya Vaishnava. For the Gaudiya Vaishnavas, like it is very prominent because the pioneer of this particular movement was Chaitanya Mahaprabhu, and it is the Charitra. It is like whole life of Chaitanya Mahaprabhu, which is given, right? So now these people they knew about perfectly about Gaudiya Vaishnavism, and he on the other hand he knew perfectly well what was Bengali Vaishnavism. He knew about Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu. He knew about all of that. But what was this? The tradition in Bengal. This particular person, but these people they hardly knew it. Now, in order to clear that up, he was just thinking, how is that possible? How is that possible? But when he was able to understand, when he met Srila Prabhupada, Thomas J. Hopkins, when he met Srila Prabhupada, then he was able to understand why these people are taking up to Krishna consciousness, even if they are not having that clear idea what Krishna consciousness is. Because when he saw Prabhupada, Prabhupada actually embodied this whole tradition and culture. So Prabhupada was actually embodiment of that. And he himself was so full of Krishna consciousness that he inspired these people to take up to Krishna consciousness. Because, अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, जनरली आप बच्चों को देखेंगे ना, छोटे छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे माता पिता की तरह एक्ट करते हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, तो लड़का रहेगा तो वो बाइक देखेगा, बाइक पे चढ़ जाएगा, हैंडल घुमाना चालू कर देगा जहाँ उसकी ताकत लगेगी। छोटी बच्ची रहेगी तो मम्मी को देख के छोटा प्लास्टिक किचन सेट ला करके कुकिंग चालू कर देगी। क्या उनको पता है एक्चुअली में कुकिंग से क्या होता है, गाड़ी से क्या होता है? नो, they actually look up to a person. Like if he's a father, the son looks up to a father. My father looks, so impressive when he sits on the bike. I also want to be like him. उसको समझ कुछ नहीं आता, उसको पता नहीं बाइक क्या है, कहाँ जाना है, बाइक में पेट्रोल पड़ता है, गियर होते हैं, कितने गियर लगाने का, क्लच छोड़ना, उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज पता है क्या? I want to be like him. So that was the mood of Srila Prabhupada's followers. When they saw Prabhupada, Prabhupada was so full of Krishna consciousness. He was actually the embodiment of that whole culture that they just wanted to be like him. Yes. Just as simple as that. बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि Krishna consciousness क्या है, क्या करना है. We just want to be like him. It's just that. Later stage पे like they never knew Shastras and didn't have. Then Prabhupada founded it. He was like very strong. No, you should study Shastra. You should learn Vedanga. You should know how to do Harinam Sankirtan. You should go out for book distribution, and this is how you do. And it's kind of like that. Then it all started, growing. But the main thing was, that the Western disciples of Prabhupada, they had faith in him before the Shastras. That's the whole thing. Similarly, that answers our first question. Why we are doing this? What was that thing that made them do? So this is our condition also, at least. In the starting days, while I was in, let's say, before coming to New Bhakta, I used to stand in Gaur Aarti. So for me, it used to be like, कि जब कोई अच्छा सिंगर गा रहा है, अच्छा मृदंग बज रहा है, अच्छा कव्वाल बज रहा है, then I'll dance. वरना नहीं होता. फिर मैं साइड में खड़ा होकर just look at Aarti and that's it. But there's this one devotee who, like myself, and he, like we both did New Bhakta together, and
he used to dance very enthusiastically. And कोई भी कीर्तन नहीं आ रहने दीजिए आप. He used to dance very enthusiastically. So one day I asked him like, Prabhuji, like, how can you dance like that even though you're not? He said like, I just dance. So I said like, but the thing is, you have to be enthusiastic also. You have to be happy. You have to be dedicated. So he showed me one quote of Prabhupada. He quoted practically. He said, Prabhupada said, in the initial stage, you just do it. Everything else will follow. You just do it. You have to dance, you dance. Enthusiasm आएगा, happiness आएगी. Service है, करो. बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सर्विस अच्छी नहीं लगती, प्रसाद अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, सर्विस तो करना पड़ेगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा वरना कि आपको प्रसाद भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप सर्विस नहीं करो. If you do service, you just get small something, little bit, one chapati and sabji, that's it. You'll be full, like kind of filled. That's the glory of service. So, like we continue. But the point is that in India, we are saying that कि हाँ चलो चीजें अच्छी है, but West में क्या था, इसका एकदम opposite था. क्योंकि प्रभुपाद तो वहाँ preach कर रहे थे. That's why we are discussing about West. It was like completely different. And the faith that Prabhupada had in his disciples was extraordinary. And the faith that he reminded was also extraordinary. Prabhupada trusted his disciples to an extent कि आज तो हम लोग हैं यहाँ पे अंदर डिवोटीज. आप में से कितने लोग रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए आते हैं? एक दो आप आते हैं? एक दो तीन चार पाँच, देखिए 5 6. Okay, so 6 of us, right? So for us, for registrations, if someone says there for 1 hour or something like that, और फिर उसके बाद हमारा मन थोड़ा ऐसा लगता है चलो 1 घंटा हो गया, थोड़ा प्रसाद का टाइम हो गया, चले जाते हैं. But Prabhupada used to, for his disciples, what he used to say? He used to directly send them to countries कि आप जाओ इस जगह पे प्रचार करो. वो ऐसी जगह है जहाँ की भाषा उनको पता नहीं, कॉन्टैक्ट किससे करेंगे पता नहीं. But now just look at the faith of Prabhupada's disciples in Prabhupada. They used to go, जाते थे, and they used to establish temple also. Temple खड़ा करके आ जाते थे. आज की डेट में हम लोग एक डिपार्टमेंट या एक सेवा नहीं कर पाते. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. I'm just speaking honestly. I'm not saying that you all should do, but I'm just saying that it is so difficult for us in order to do that. So what are we lacking? Or what that is why we are discussing this. भगवद गीता. Now अभी हम लोग सोच रहे होंगे तो भगवद गीता चल रहा है और ये क्या कहाँ प्रभुपाद पास टाइम्स पे आ रहा है. But don't worry, आप लोग सुनेंगे, you will be able to understand the chronology of it, right? Because we are talking about what? Surrendering, right? That is what we are talking about, surrendering to Krishna. Our very first question, how to develop that faith, how to become successful and happy by following the process. But why we are not able to surrender? Now we are giving the example, how to apply these two things. You said we are having desire. Other thing you said that we are having problem with association, right? We have the fears and everything. But just look at the disciples of Srila Prabhupada. They gave up their desire or they failed it with Prabhupada's desire. Prabhupada wanted a temple there, okay, that's our desire. We'll leave everything. They go to that particular place, establish. The pastimes here also, कि beach station में प्रभुपाद आ रहे हैं, disciples को बोला एक काम करो, आप लोग 2 जन इसी स्टेशन पे उतर जाओ और यहाँ पे टेम्पल एस्टैब्लिश करो. ऐसे चलती ट्रेन से उतार दिया. कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अच्छा ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है, जाओ इनके पास और जाके टेम्पल एस्टैब्लिश करो. This was like Prabhupada. In our moment, right now we don't do that. आप में से बहुत लोग आए होंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोलते, चलो अच्छा 1 माला कर लो. अच्छा 1 माला, फिर थोड़े समय बाद बोले 4 माला कर लो, 4 के बाद में फिर 8 16. अच्छा 16 कर लिया, ठीक है चलो इनिशिएशन ले लो. तो हम लोग बहुत लीनियंट है, बिकॉज मर्सी कम्स ऑन. बहुत मर्सीफुल सब हमारे शिक्षा गुरु तो बहुत मर्सीफुल है हम लोग. पर वी आर नॉट क्वालिफाइड, still like he gives us opportunity, like at least you're doing something. So because of him we are able to do something. So at least we try to do that little thing to the best possible extent, right? That was one thing, like now Prabhupada said that just do as I am doing, right? Don't think about anything else, just do as what I am doing, right? And the thing is, because in those days it was very difficult for them to understand the intricacies of the philosophy, right? इतनी बारीकियां होती हैं शास्त्रों में. अगर आप हरि भक्ति विलास पढ़ेंगे तो हम लोग
वॉशरूम से बाहर आएंगे ना तो एक ऑफेंस, दूसरा ऑफेंस, इतनी छोटी छोटी चीज है ना उसमें कि इफ यू टच योर लिप you can't touch anything else, you have to do आचमन. If you look to an opposite sex, a female is going, even if you look and if you're going to worship, no, then you'll have to do आचमन. You don't have to look to another gender. And there's so many things. ये तो मैं आपको एक दो बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे complications. इसलिए प्रभुपाद what he used to say that just do as I am doing, just as father, you know, father always says a child what, just do as I am doing, क्योंकि बच्चों की आदत क्या होती है, बच्चों के साथ आपको ज्यादा रहे हैं तो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बेवजह किसी को भी चिपका देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखें किसी को भी मारते रहते हैं, आपस में भी लड़ाई कर लेंगे, एक दूसरे को बिना बात के मार देंगे. तो इसी प्रकार से माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा ये नहीं करना. बाद में बच्चा आगे चल के बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, तो उसको समझ में आता है कि मेरे माता पिता ने क्यों बोला था ये चीजें नहीं करना है, चाकू नहीं पकड़ना, आग में हाथ क्यों नहीं डालना, चलते पंखे में हाथ क्यों नहीं डालना, वो बाद में समझ आएगा. लेकिन इनिशियल स्टेज पे क्या रहता है कि नहीं करना है. Right? You don't have to do that. That's it. The same thing, you know, even Prabhupada said, you know, that you don't have to do it. Okay? And Srila Prabhupada actually lived what he thought. Right? And he just told, you know, you have to be kind of, you know, absorbed in Krishna consciousness, you will have to serve accordingly. Right? But the thing is that he was able to lead a life very easily because it was very natural to him. For Prabhupada, this kind of lifestyle was very natural because he was pure devotee. Right? Even we are trying, हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, या फिर अगर हमको बोला जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो this is the example. How to do it or how can we do it is by following in the footsteps of the acharyas, right? When we follow in the footsteps of acharya. We are hearing about Arjuna, right? हम लोग अर्जुन के बारे में सुन रहे हैं. Arjun was there and he was doing everything. And we might even argue, या फिर हम लोग ऐसा बोल भी सकते कि उस टाइम तो कृष्णा उनके साथ में थे ना, तो भगवान बता रहे थे और वो कर रहे थे. हमारे साथ कहाँ थे, हमारे साथ है कोई है, भगवान कृष्णा है आपके साथ में है, कहाँ पे, सब जगह. ये तो अपनी फिलॉसफी दे दी मुझको, ये फिर कर क्यों नहीं रहा, प्रैक्टिकलिटी में. मेरा क्वेश्चन क्या कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग ये रीजन दे सकते हैं कि कृष्णा इज नॉट देयर विद अस, बट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्णा इज देयर विद अस. सो कृष्णा से सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं, व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट इफ वी आर रियलाइजिंग. सो दिस इज लाइक अ क्वेश्चनिंग द मेंटालिटी, नॉट द पर्सन. ओके, सो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कोई गलत है, आप में से कोई भी कुछ बोल रहा है, so we are just defeating or we are just shooting down the mentality, that particular ideology, not the person. तो ऐसा hesitate मत होना कि अगर मेरे को कुछ लग रहा है तो मैं खुल के कैसे बोलूं. बोलिए, आप बिंदास बोलिए, वरना सीखेंगे कैसे. और मेरे लिए भी अच्छा, मैं भी ऐसे सोचता, लेकिन मैं क्या माइक पे नहीं बोल सकता ना, आप लोग पूछे नहीं तो मैं कैसे. तो this is one thing, right? He is there, but क्यों नहीं कर पा रहे, मैं भी not able to. हम लोग तो बोल सकते हैं हमारे साथ नहीं. So this is what the शास्त्र says, you know. Lord is there within everyone as परमात्मा. भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर. कितने लोग इसको नहीं मानते हैं, हाथ ऊपर करो, सब मान रहे हैं. बट ये भी तो मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, परमात्मा को देख पा रहा है कोई, कोई नहीं देख पा रहा. तो कौन है? So this thing comes in, you know, Acharya Vapusha in Uddhav Gita. So this is the statement that the spiritual master is actually Chaitya Guru. Chaitya Guru. He is a representative of the Supreme Personality of Godhead, and the spiritual master himself is the God. God in the sense because he follows him through and through. That is why in our, you know, Mangalarti says Sakshat Haritvena Samasta Shastra is similar, not exactly. बहुत सारे लोग equal level पे बोल देते हैं, but because he is very dear to the Lord, that is why we consider him. So now how can we make it perfect? अब तो पता भी चल गया गुरु के रूप में है. तो आप में से कितने लोग जो आदेश दिए, अब गुरु ऐसा भी नहीं कि अभी हम लोग बोले कि यार हम तो कहाँ मिलेंगे किसी गुरु से, कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट डिवोटीज, यू नो, सम सीनियर डिवोटीज ऑफ अ पर्टिकुलर महाराज, लेट्स से, and they are the ones who are acting on his behalf. Whatever he is saying, they are relaying it to you that Prabhuji, can you please do it like this. लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं महाराज बोलेंगे तो ही करूँगा, उनका नहीं करूँगा, बाकी कोई दूसरा मुझको बोलेगा.
like we face this many times when we are doing services. इसलिए प्रभु जी ने बोला नहीं आप क्यों बोल रहे हो, आप मत बोलो, हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम प्रभु जी से सुनेंगे, तो ऐसा होता है. That is one thing. But now, coming back to the point, is that that Lord is there in this particular thing, and as spiritual master, He instructs us, right? And that is why our whole movement is there, and in our whole movement, this is what we are kind of practicing as of now. Similarly, the teachings of Bhagavad Gita, as we discussed about Srila Prabhupada, right? He imbibed the teachings in his life, and then he acted accordingly, and he thought how to act. Similarly, when we study Bhagavad Gita, so this Bhagavad Gita is not something which is just theoretical. बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ करके इसको हाँ ठीक है हो गया. This is all practical. ये हमारा जो 45 minutes का session था, it was just to show the practicality of this particular words of Bhagavad Gita. So अब ये चीज practical है, लेकिन हम लोग इसको apply नहीं कर रहे हैं. So similarly, if we look at it, sometimes we want guidance in spiritual manner. But the thing is, just like Arjuna, अगर आप देखेंगे, even in context to the fight, when the fight was going on, so what did Arjuna say? Arjuna had very practical arguments, बहुत practical arguments था उनका, बहुत practical reasons था और practical solution भी था. अर्जुन ने क्या बोला कि हम लोग इतने सारे लोगों को मारेंगे, अपने गुरु को मारेंगे, ठीक है, ये उनका आर्ग्यूमेंट था. इसका सोल्यूशन क्या दिया? ठीक है चलो फाइट ही नहीं करते हैं, लड़ते ही नहीं है, खत्म हो गया पूरा, उधर ही खत्म. कितने लोग एग्री करते हैं? आज सही बोल रहे थे ना, ये प्रैक्टिकल. क्यों इतने लोगों को मारना? गुरु जिन्होंने आपको शस्त्र चलाना सिखाया है, जिन्होंने आपको शास्त्र समझाया है, उनको ऊपर आप बाण मार रहे हो, कैसे चलेगा? उन्हीं को मार डालना, ऐसा प्रैक्टिकल था. मतलब आई वुड हैव अग्रीड विद दैट, प्रैक्टिकल. बट द थिंग इज what he says, like this was actually very convincing, but on a spiritual context, अगर आप देखें थोड़ा higher consciousness पे, on theoretical level. Practical तो अभी तक उतरा ही नहीं है ना, ये तो theory में था, ये उतरा ही नहीं अभी तक, right? तो theoretical level पे बहुत ये था कि चलो applicable है. But then what Krishna says, no. The thing is, whatever action you are doing, first of all आपका क्षत्रिय धर्म है, आपको लड़ना पड़ेगा, आप अपने धर्म से जा नहीं सकते. Regarding कि हाँ इनको मारना उनको मारना, you just keep me in the center. आप मेरे को स्मरण करके you do your duty. That's it. You will not get any karma, right? That is what Krishna instructs Arjuna. Similarly, right? So that was one thing. कि हाँ अभी हम लोगों को तो मिल गया, हम लोग तो चीजें कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? और क्या हमारे बिल के इसमें रहेगा तो ही हम करेंगे क्या उसको? मेरे को कोई सेवा चाहिए तो मैं सेवा चूज कर लूँगा, चलो देखते हैं ये सेवा है, ठीक है मैं ये वाली सेवा करूँगा, बाकी दूसरी सेवा नहीं करूँगा. बट आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू डिफरेंट सर्विस, बट मैं अपना सोच रहा हूँ मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है दूसरी चीज़ करना. दैट इज नॉट सरेंडर. सरेंडर इज लाइक वी आर लाइक एक्चुअली वेरी फार अवे, राइट? So what we have to do or how we have to work is by believing in the instruction of the spiritual master, which is spiritual instruction, discarding our material intelligence और material solution. हमको spiritual solutions को apply करना है, material solutions को sideline करना. That is when things will start to work out and you'll be able to actually apply Bhagavad Gita in your life, right? That was one thing. Now, another that हम लोग में से बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, ये simple, we'll just stay outside, we'll work and earn money, and this is like something which is to be considered. Don't think as a personal comment या कुछ, but this is what I've heard and I'm kind of sharing. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि okay, we'll live outside and like without applying Bhagavad Gita in our life, right? Bhagavad Gita is very practical. We will live outside, अर्न करेंगे, टेंपल में आके we'll just hear Bhagavatam, hear the pastimes of the Lord, go busy again. So if you look at this, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना theoretically, practically, but the thing is वो कैसा होगा आप लोगों को पता है? जिस प्रकार से हमको सीनियर जूनियर में सिखाया जाता था ना, सिंड्रेला एंड द सेवन डॉर्फ्स या फिर स्नो वाइट की स्टोरीज, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, कैसे हम लोग रुचि से सुनते थे ना उसको,
Similarly, when we come to the temple and we hear about the pastimes of the Lord, playing with the gopis, Krishna stealing the butter, Krishna killing the demons, वो भी वैसा ही होगा. Transformation नहीं लाएगा. If you don't apply teachings of Bhagavad Gita. Very strong statement. मैं भी digest नहीं कर पाया था, but मैं इसको सुबह से ही सोच रहा हूँ. Like इसको मैं बोलूँ नहीं बोलूँ क्या करूँ. But I'm just sharing. Now you all can take this statement and think about it. That's the whole thing. So this particular shloka, 74 is like that, And another thing is that Lord says what, अभी हम लोग ये बोल सकते हैं चलो एप्लीकेशन नहीं आएगा तो पढ़ के ही क्या फायदा, हमको तो कोई गुरु मिल नहीं रहे. तो in the same chapter you go to the 70th verse wherein this shloka, I just read the translation because there's only translation. When Lord says, and I declare that he who studies this sacred conversation of ours worships me by his intelligence. So पढ़ने से भी आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, worshipping, right? So this was all in all, something that I was able to share by hearing and kind of practically relating some things. Even though I'm not qualified, थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाया, थोड़ा contemplate कर पाया, और प्रयास करूँगा आगे चल के अप्लाई भी करने का, मैंने शेयर कर दिया. बाकी if you all are having any questions, please ask in relation to this particular topic only. If I'm able to answer, well and good. If not, then I'll consult and I'll kind of. Any corrections? Okay, yes, bro. Question. Your name, bro? Vishal. Yes, bro. Question. प्रभु जी का क्वेश्चन है कि अपने अहंकार को भगवान के प्रति कैसे समर्पित करें. अहंकार लेकिन किस चीज का? आपको पता ही नहीं है किस प्रकार. अपने आप को ही समर्पित कर दो ना. जब अहंकार आपका अपने आप को समर्पित कर दो, आ जाइए सेवा कीजिए. सेवा करेंगे, समर्पण वही होता है ना, दास होता है. और जो बोलते हैं हम लोग कि जो दास होता है वो अपने मालिक को किस प्रकार से सेवा करता है, बस समर्पण हो गया. उसी प्रकार से आइए राधा राज भी आइए, सबके मालिक है, बाकी सब दास ही हैं. इसके लिए हमारे इसमें हाईएस्ट परफेक्शन क्या है आपको पता है? जब कोई दीक्षित होता है तो उसको एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है और उस नाम के आगे एक उपाधि जोड़ी जाती है. बाहर क्या लगता है? बाहर पहले आपका लगेगा क्या, अगर स्टार्टिंग में एसोसिएट के बाद में एसोसिएट हटेगा तो पोजीशन रहेगा जो आपका इंजीनियर, फिर उसके बाद में सीनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद में टीम लीडर, फिर मैनेजर, फिर उसके ऊपर जाओगे वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, एमडी, कुछ ना कुछ बनते बनते ऊपर जाओगे. हमारे इसमें एकदम उल्टा है. आप जितना ऊपर जाओगे, इनिशिएशन हो गया, यू बिकम दास बनोगे, सर्वेंट, राइट. सर सिंपल. बाकी अहंकार ये सब तो अंदर आने के बाद भी नहीं कम होगा. मैं बता रहा हूँ, जीता जागता उदाहरण होगा. अहंकार बहुत रहेगा, हद से ज्यादा रहेगा. लेकिन ये कि भक्तों के बीच में रहेंगे ना तो भक्तों के पास स्पेशल वेपन होता है, उसको तोड़ते रहेंगे बीच में. लेकिन वो कैसा ना, स्किन जैसा ही होता है. कैंसर पता है कैसा होता है? कैंसर इज एक्चुअली accumulation of layers, एक्स्ट्रा मास बन जाता है. लेकिन ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं डिवोटीज सर्जरी में, वो सब चीज निकालते रहेंगे समय. वेरी so when you be in devotee association, everything will be cured. हर एक चीज क्योर हो जाएगी जिससे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट. चैंटिंग कितना तो बढ़ेगा ही ना. स्टार्ट किया है, स्टार्ट 16 से करना चाहिए. 16 ये अहंकार होना चाहिए. लोग अंदर रह के कुछ काम धंधा नहीं करते. मैं काम धंधा करके पढ़ाई लिखाई करके 16 वाला करूँगा, मेरे अंदर था ये, मैं करूँगा. बहुत अहंकार. और कोई क्वेश्चन? No questions, I guess. बहुत अच्छा लेक्चर हुआ. चलिए, so thank you all for hearing. ऑनलाइन डिवोटी उसमें भी सिर्फ कृष्णा प्रभु ही हैं, ये तो हमारे लोग ही सुन रहे हैं. चलिए कोई. So we'll end the lecture here. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. I'll ask for forgiveness. Okay, once I go through this,